नमस्कार सभी को। दिस वीडियो आई हैव टेकन द ट्रांजैक्शंस स्पेशली रिलेटिंग टू द बैंक्स। जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में बैंक से रिलेटेड होते हैं, हाउ टू रिकॉर्ड दोज ट्रांजैक्शंस। लेट्स सी। पूरे ट्रांजैक्शंस में ओनली 3 पार्टीज विल बी वर्किंग, बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट एंड कस्टमर्स अकाउंट। यही 3 को लेके हम लोग इस पूरे एंट्री को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। द फर्स्ट transaction says when cash is deposited into bank. Remember, cash in bank relates to the real account, and the rule of real account says what comes in debited, what goes out credited. तो पूरे transaction में try to understand whether cash is coming in or going out. Like the first says when cash is deposited into bank. Now that means if cash is deposited, that means cash is going out of the business, right? Therefore cash account is credited in the entry and deposited into bank. So for the bank, cash for bank account, bank balance is increasing, right? So bank account debited to cash account. What comes in here? Bank account checks in the form, or our cash is coming in the form of checks or in the bank account. जो भी कैश है हमारा सेविंग्स अकाउंट में या करेंट अकाउंट में इंक्रीज हो रहा है, दैट इज वाई बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू कैश अकाउंट. सेकेंड, व्हेन कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक. नाउ bank say if cash is withdrawing out, so in this way this cash is coming into the business, okay? Therefore cash is coming in, therefore cash account debited to bank account. When checks, drafts received from the customers are deposited into bank on the same day. Sometimes it happens, checks or draft we received from the customer एंड दैट चेक जो हमको कस्टमर ने दिया हम उसी दिन बैंक में लगा देते हैं. इन दैट केस व्हाट एंट्री शुड बी पास्ड? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. बैंक अकाउंट डेबिटेड बिकॉज आवर बैंक बैलेंस इज इंक्रीजिंग ईयर टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट्स, बिकॉज कस्टमर पर्सनल, यहाँ पे कस्टमर is the giver and the rule of personal account says receiver debited, giver credited. Therefore customer personal account is credited. Now when checks, draft received from the customers are not deposited into bank on the same day. Say for today we received the check, but we have deposited into some we have deposited the check into bank some other day. In that case what entry should be passed? Checks in hand debited to customer personal account. Customer personal account is credited because being the personal account, giver is credited, इसलिए ये credit हुआ है. And checks in hand because the check is still in the business, ये अभी बैंक में नहीं गया है, इसलिए डेबिट क्या हो जाएगा? चेक्स इन हैंड डेबिटेड. देन ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स आर सेंट टू द बैंक. जब हम जो चेक विच वी हैव रिसीव्ड इन द प्रीवियस एंट्री, नाउ व्हेन वी सबमिट दैट चेक और प्रेजेंट दैट चेक इनटू बैंक, तब एंट्री क्या हो जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. सेम अकाउंट, बैंक बैलेंस इन इंक्रीजिंग, बैंक में कैश आ गया है, इसलिए बैंक बैलेंस बढ़ने से बैंक अकाउंट इज डेबिटेड टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. ध्यान दो, इन एंट्री 4 and 5 customer personal account will be credited in both the cases. The reason, giver is credited, but when you do not deposit check on the same day, then at that time you have to debit checks in hand, whereas if you deposit the check into bank, that time bank account should be debited. Then next entry, when customer directly deposit the amount into our bank account. Now अभी क्या हुआ? This time this recorded this transaction says the customer directly produces the checks into our bank. So here bank account debited to customer's personal account. When check previously deposited into bank is dishonored. Now this word is important, dishonored. Dishonored का मतलब होता है चेक का बाउंस हो जाना. In that case what entry should be passed? Personal customers personal account debited to bank account. The reason, हमारा कैश हमको मिल नहीं पाया, ठीक है, हमारा बैंक अकाउंट बढ़ नहीं पाया, बैंक अकाउंट इज रिड्यूस्ड, दैट इज़ वाई बैंक अकाउंट इज क्रेडिटेड. एंड कस्टमर पर्सनल अकाउंट बिकॉज कस्टमर इज द गिवर हियर. डिसऑनर्ड होने का मतलब है चेक बाउंस हो गया, दैट मीन्स कस्टमर इज लायबल टू पे अस. तो कस्टमर यहाँ पर गिवर है, देयरफॉर कस्टमर जो है यहाँ पर रिसीवर है. चेक अगर बाउंस होता है तो वी विल रिटर्न इट टू द कस्टमर, राइट? जिसने हमको चेक दिया, द चेक इज बाउंस्ड, दैट मीन्स दैट कस्टमर्स अकाउंट डू नॉट हैव द सफिशिएंट बैलेंस, that is why the check is dishonored. In that case we will return the check to the customer. In that case customer यहाँ पर receiver हो गया, therefore being receiver personal account, a rule says if receiver it should be debited, therefore customer personal account is debited to bank account.
Now, when payment is made by issue of check, whatever payment you made, in that case, bank account will be credited because bank account is reduced and personal account is debited. The reason personal account, whatsoever the customer name should be coming there, and they are the receiver, therefore they are debited. Then on the right side, you see when expenses are paid by issue of check. So in that case, expenses being the nominal account says all expenses and losses should be debited, therefore expense account debited to bank account. When cash is withdrawn from the bank for personal use, remember whenever you withdraw money or goods in for the personal use, in that case drawing account should be opened. So here drawing account debited to bank account. Then 11th, when 11th has got two cases. When interest is charged by bank, जब interest bank charge करेगी, in that case interest account debited to bank because interest here is our expense, right? And next, when interest is allowed by the bank, जब हमको बैंक interest provide करती है, तो that time interest becomes income. Therefore bank account debited to interest received. Interest received being the nominal account, whatever incomes and gains should be credited. Therefore interest received is credited. Then 12th number, when bank charges some amount for the services rendered by the bank gives us some services जैसे कि SMS banking, SMS के थ्रू हमको जब बैंकिंग ट्रांजेक्शन्स आते हैं, दैट इज़ द सर्विसेज bank providers. For that, bank charges some certain amount. In that case, what entry should be passed? Bank charges account debited to bank account. Bank charges is debited. The reason, nominal account rule says all expenses and losses should be debited. So bank charges an expense for the business here, therefore it is debited. Then second case, when checks is received, डिस्काउंट अलाउड एंड डिपॉजिटेड ऑन द सेम डे. आपको चेक रिसीव हुआ है, आपने डिस्काउंट अलाउ किया है, दैट मीन्स चेक से फॉर हमको 5000 का मिलना था, बट हमने 200 का डिस्काउंट अलाउ कर दिया, राइट? सो इन दैट केस 4800 ही हमारे पास आया है एंड वी डिपॉजिटेड द सेम डे. इन दैट केस बैंक अकाउंट डेबिटेड 4800, डिस्काउंट अलाउड डेबिटेड 200 टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. बिकॉज हमारे एग्जाम्पल में हमने 5000 का चेक लिया, लेकिन उसमें हमने 200 डिस्काउंट अलाउड कर दिया, तो यहाँ पे डिस्काउंट देना इट्स अ लॉस फॉर द बिजनेस, देयरफॉर डिस्काउंट अलाउड इज डेबिटेड. बैंक अकाउंट डिस्काउंट काट के जितना पैसा हमारे हाथ में आया है, दैट बैंक अकाउंट विल बी डेबिटेड अगेंस्ट दैट अमाउंट टू कस्टमर पर्सनल अकाउंट. देन इफ चेक डिसऑनर्ड, डिस्काउंट अलाउड ऑल्सो विड्रॉन. समटाइम्स जैसे कि बिफोर दैट वी हैव गॉन थ्रू वन केस जहाँ पे चेक वॉज डिसऑनर्ड. इन दैट केस आपने डिस्काउंट अलाउड भी विड्रॉन कर दिया. से फॉर ऊपर वाली क्वेश्चन में, ऊपर वाली केस में इफ़ यू से 4800 का चेक हमने लगाया, बट बिकॉज ऑफ इनसफिशिएंट बैलेंस इन द कस्टमर्स अकाउंट द चेक इज डिसऑनर्ड. इन दैट केस कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक टू डिस्काउंट अलाउड. डिस्काउंट अलाउड यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, राइट? दैट मीन्स डिस्काउंट अलाउड को हम लोग क्रेडिट करेंगे टू बैंक अकाउंट एंड कस्टमर पर्सनल अकाउंट इज डेबिटेड. द रीज़न हम लोग उस चेक उसको रिटर्न कर रहे हैं, तो हियर कस्टमर पर्सनल अकाउंट बिकम्स द रिसीवर अकाउंट, देयरफॉर इट इज़ डेबिटेड. सो ऑल इन ऑल, यू हैव टू रिमेंबर, read the transactions carefully and try to understand whether cash is coming in or going out, whether bank balance is increasing or decreasing, and if check is dishonored, if check is deposited on the same day, not on that day, what entry you have to pass. So this is what this video talks about.